Today on the Magnifying Glass, I talk about the other side of music, the behind the scenes, the administration, with the CEO of record label reartspk, Azeem Hamid. Let's meet Azeem. Assalamu alaikum. Today we are here with Azeem Hamid, CEO of Rearts. It's time to put Azeem Hamid under the magnifying glass. How are you, Azeem? I'm good. I'm good. Thank you for asking. How are you? I'm good. I want to start off by asking you, what is Rearts and what is its goal? I'm asking this because I'm a little confused. Is Rearts just a distribution company, or you're a proper record label with with marketing and PR and everything? All right. So that's the $1,000,000 question, actually. Everyone keeps on asking me, what is Regards? It's a curatorial company, to be really precise. It's a curatorial company which focuses on arts, building up an arts ecosystem around Pakistan and the globe. And within that, we have a subsidiary which is called Rearts Records. So it's Rearts Pakistan, because there's another Rearts I told you earlier about. There's one in Europe as well, which focuses on digital content and art consultation, art development, and curation as well at the same time. So specifically speaking, because we're talking in terms of Rearts Pakistan, तो मैं ज़्यादा उस पे focus करूँगा ताकि हमारा agenda भी वही रहे. So again, in Pakistan, we've curated a lot of festivals as well. Art festivals in Pakistan. We've curated galleries, we've done art exhibitions of renowned artists from around the globe in Pakistan. We are launching our own digital arts festival called the Lahore Digital Arts Festival very soon through the arts in Pakistan, which is for like the city of Lahore and for people in Pakistan and around the globe as well. It's open. Aajkal open call bhi hui bhi hai. So people are submitting their artworks and stuff. But when it comes to Rearts Records, the Rearts Records is a record label, and we envision it to become a full record label. Not there yet? I think it's just been 3 years, to the record label in Pakistan. I think we're somewhat there when I compare myself with other organizations currently functional record labels in Pakistan. I think we're pretty much ahead in a lot of ways. We know like our distribution gig is super strong. We're directly working with mostly all streaming platforms, the major ones around the globe. Not all, but at least the major ones, and even the local ones in Pakistan. Which includes like Bajao, ek hai bada zabardast platform. We're working with them directly. We're also in contact with people from Spotify. We're coming to Pakistan. We are working directly with Apple Music. We have Amazon, and we're like making sure that हमारा जो Pakistani content hai, it goes to the right masses and right people around there, and it's curated properly digitally as well. When when you open up a profile of an artist on Spotify, for instance, Led Zeppelin open करते हैं या Beatles open करते हैं, कोई भी 30 Seconds of Mars, anyone, Katy Perry, for instance, it's so curated, it's so well organized. Yes. You see the entire catalog, you see images about them, it builds up a particular interest in you that you really want to go in and see and hear the music. चाहे आपने कभी जिंदगी में सुना हो ही ना हो. So we're actually doing exactly the same thing. So this is what we call curation. So this is where our curation bit comes in within. The other thing what we're doing is that we've also this year one of the milestones that we achieved was designing physical albums, bringing the concept of physical albums back to Pakistan, and that too with merchandise. So we're making and we introduced the concept of USB albums rather than the traditional CD album. हम USB के ऊपर ले आए थे. So it's like a card which is printed from जैसे CD के ऊपर print होता है और पीछे बैंड का नाम लिखा हो, पूरा वही बुकलेट और सारा कुछ जो customized shirt or merchandise. It's like an album box, that we. So we did one for Bayan, we did one for Mughal Fang, we did one for Kashmir. We hope to do more, but of course, उसमें budgets होते हैं, and the budgets are too tight, and there are no sponsorships as such. So we were fortunate enough because in terms of Kashmir and Bayan, Pepsi was there to support them, one of the corporates. And when it came to Mughal Fang, did self-finance, but they still managed to make some money through different gigs back when things were normal. So we were able to release everything pre-COVID
actually. So right after releasing Kashmir's album, I still remember कि 8th को हमने कश्मीर की album के first week of March में कश्मीर की album launch हुआ है, और उसके 2-3 दिन बाद में लाहौर आया हूँ तो कोविड अनाउंस हो गया, लॉकडाउन अनाउंस हो गया, लिटरली ये हुआ था. So और उससे 1 महीने पहले हमने बयान का किया था, 2 महीने पहले मुगले फंक का किया था. So, you know, we were like getting into it. We delivered music albums to Bangladesh, Japan, Netherlands. पता नहीं मैंने कहाँ भेजी थी, कोविड के अंदर भी भेज रहे थे हम लोग. आपने बात कर रही थी पीआर की बात कर रहे थे, मैनेजमेंट की. अच्छा, हम मैनेजमेंट नहीं करते, बट हम म्यूजिक मैनेजमेंट करते हैं. दैट्स डिफरेंट. सो आर्टिस्ट मैनेजमेंट नहीं करते, वी डू आर्टिस्ट का म्यूजिक मैनेजमेंट. सो दैट्स वन ऑफ द थिंग्स. सो उसमें कैटलॉग्स आ जाते हैं, कैटलॉगिंग आ जाती है पूरी, उसमें डिस्कॉग्स आ जाते हैं उनके. आई कैन शो यू स्टफ लाइक ऑन, इफ यू अलाउ मी टू शेयर माय स्क्रीन, आई कैन लाइक यू नो शो यू स्टफ हाउ वी डू इट. So I'm just gonna like open up my Spotify, so just to show you things that how we promote Pakistani music. So you know, so this is Reart's official page, and you know, उसमें फिर हमने playlist भी बनाई हुई है where we are like 2000 Pakistani hits, women of indie Pakistan indie, and there's Pakistan top 50 which we regularly update. So yeah, but then if you go to our artist profiles, like you know, any artist you pick, I'll go with the like known names so it's easier. For instance, Kashmir. So yeah, अब you see their entire catalog is available, placed in one. Mostly the profile is verified. You go into about, you find about all their like place like links are there. You have information about them, and regularly the image gallery is updated according to a new release. So you know, this is to keep sure that everything is aligned and integrated, and you know, it keeps on building the interest. You know, अब जैसे if I look into older like pigeon, हमारे मुख्तलिफ बैंड्स वगैरह का कंटेंट अवेलेबल है. अगर मैं एक बड़ा नोन बैंड है जुनून, तो अगर मैं उनकी प्रोफाइल पे जाऊँ, so you see nothing curated. So you know, वो जो एक आइडिया होता है ना विजुअल इम्पैक्ट का, सही है, so that is lacking. Although they might have hits, they might have everything, but you know, that visual experience. So maybe उनका experience शायद, अगर मैं कोई नया viewer हूँ या नया listener हूँ from this current generation that's growing up, maybe I might not resonate myself with you know that well, because इसी वजह से मुझे वो visual appeal नहीं मिल रही, because हम visuals के साथ एक sensory motion है. So ये सारी चीज़ें हम करते हैं. We try to support our artists to the utmost in terms of when it comes to distribution. हम उनकी, अब बात आप करते कि मार्केटिंग वगैरह करते हैं, हम मार्केटिंग as such करते नहीं, but we support our artists in designing their entire campaigns. काफ़ी ज़्यादा artists हैं, of course they don't have the financials or they don't have the support to go get it done externally. So that's where Rearts comes in as a support group to support the artist for their particular release and create an entire campaign around it. फिर हम लोग Rearts पे अपने campaigns भी बनाते हैं, अपने हमारे Instagram page पे हमारे अपने campaigns चल रहे होते हैं. तो ये this is what Rearts is so far. That's good to know. फिर अब ये बता कि how do you guys recruit or sign bands or artists? वो आप ढूंढते हैं, वो आपके पास आते हैं, क्या सीन होता है? यार honestly speaking, मेरा तो म्यूजिक का बैकग्राउंड नहीं है, ना ही मेरा जो co-founder नजम, who was a previous CEO, I'm the second one. तो हम दोनों co-founders जो हैं, हमारा म्यूजिक बैकग्राउंड नहीं है, हमारा आर्ट्स का बैकग्राउंड है, आर्ट एंड डिजाइन का बैकग्राउंड है. नजम का तो बकायदा इंजीनियरिंग का है. And then we have a third partner, Shoaib Iqbal, who also has an arts background. Again, nothing to do with music. हम तीनों को म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स बजाने आते हैं, ना हमें कोई अले बेपे ते पता है कि साउंड रिकॉर्डिंग होती कैसे है, कौन सा स्पीकर किधर लगाना है, क्या करना है, वो तो उसका कोई हमें नहीं. तो इसी तरह से हम आर्टिस्ट को भी नहीं जानते in a similar way. ना हमें पता है क्योंकि you know we entered in an industry where everyone knows everyone. But we were like the newcomers. Like this is 3 years back. I'm telling you. Like when we came in, we knew nobody. हाँ, मेरा एक दो दोस्त थे जो कि musicians थे, तो मैंने उनसे वैसे ही कह दिया, यार अच्छा, maybe you know I'm trying to do this new thing. Why don't you would like to come in on board? I would love to help you guys in terms of your design and everything, which we did. मुगले फंक की बात कर रहा हूँ मैं. तो
मुगले फंक से प्रोजेक्ट शुरू हुआ, वो फिर उसको देखा दिखाई, वी रीच्ड आउट टू कश्मीर इनिशियली, फिर बयान से बात हुई, कर करा के सम आर्टिस्ट रीच्ड अस आउट, इसमें 21 है और काफी धूल था, काफी ज्यादा आर्टिस्ट थे, तो देखा दिखाई आर्टिस्ट आना शुरू हो गए। फिर क्योंकि फिर एक वक्त आ गया था कि पीपल स्टार्ट कॉलिंग इट पेप्सी लेबल, बिकॉज यू नो हमारे पास सारे पेप्सी के तकरीबन हर टॉप 4 का बैंड वाज साइंड विद अस फ्रॉम पेप्सी। बट आई थिंक उसमें एक चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट थी ना, बिकॉज आई थिंक इवन दिस यंगर लॉट ऑफ म्यूजिशियंस जो कि हमारे मेरे एज ग्रुप के हैं और आपके एज ग्रुप के हैं, इनमें हमें एक कॉमन चीज थी कि वी वांटेड टू वर्क विद लाइक माइंडेड पीपल। Like we don't want to work with people जिनका एक old fashioned ideas, a very traditional way of seeing things, very traditional. We want to be more experimental. We want to go towards more collaboration. So अब जाके जो है ना, हमने जरा चीज़ों को स्ट्रीमलाइन किया है कि we have open entries, open calls होती हैं, हमें रेगुलरली सबमिशंस भी आती हैं रियार्ट्स में, जो कि हम लोग रिव्यू करवाते हैं। उसका इट्स अ 3-step प्रोसेस। द स्टेप इज वेरी सिंपल। आइदर वी हैव एन ओपन कॉल, जो कि हम लोग साल में 2 दफ़ा करते हैं। एक हम लोग स्प्रिंग में करते हैं और एक हम लोग फॉल के शुरू में करते हैं। जैसे समर खत्म हो रहा था, हम उस वक्त अराउंड उस कॉर्नर में कर देते हैं। तो 2 हमारी ओपन कॉल्स होती हैं, वेयर वी इनवाइट एवरीवन, whosoever, चाहे वो बड़ा सा बैंड हो या छोटा बैंड हो, जो भी आर्टिस्ट हो, म्यूजिशियन है, वो अपनी एंट्री सबमिट करता है। वरना थ्रू आउट द ईयर हमें रोलिंग बेसिस पे एंट्रीज आ रही होती हैं। अब वो रोलिंग बेसिस एंट्रीज का मसला ये होता है कि वो बैकलॉग, लाइक आई सेड, वी आर जस्ट अ टीम ऑफ 4 पीपल, सो वो बैकलॉग बहुत ज्यादा होता है। और हम क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए और ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने का, बायस ना आए हम चारों की तरफ से, क्योंकि हमारा तो म्यूजिक बैकग्राउंड नहीं है, और हमारी तरफ से बायस ना आए, तो हम उसको कट डाउन कैसे करते हैं? इट्स वेरी सिंपल। तो जो एंट्रीज आती हैं, सो वी हैव अ क्रिएटिव टीम, जो एक्सटर्नल क्रिएटिव टीम, जो हमारे एडवाइजर्स होते हैं, जो होते हैं। तो ऑफ कोर्स लाइक आई सेड कि रियार्ट्स इज इन यूरोप एज वेल, रियार्ट्स इज इन पाकिस्तान एज वेल, तो हम लोग उनके पास जाते हैं। When it comes to Pakistan, we mostly look into our own roster of artists, जो कि अगर आपने for instance गाना भेजा, or maybe it's from the electronica genre, for instance, so maybe I would search for someone, an artist who is within the rearts ecosystem, जो कि electronica करता। अगर नहीं करता तो मैं externally चला जाऊंगा उसके, so I would make them listen, get their feedback onto it, how they feel about it. So इस process को करते करते 2 से 4 हफ्ते लग जाते हैं। फिर हमें एक यूरोप से भी आता है इसी तरह से फीडबैक, जहाँ हम लोग फॉरेनर्स को सुनाते हैं, फॉरेन म्यूजिशियंस को सुनाते हैं, जो कि आर बेस्ड आउट ऑफ डेनमार्क, स्पेन एंड अदर प्लेसेस। एंड देन वी मेक, सो देयर इज ऑलवेज 2 पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री, आइदर देयर म्यूजिशियंस, प्रोड्यूसर्स, XYZ, जो भी है वो इंडस्ट्री से होते हैं। 2 लोग आर्ट इंडस्ट्री से होते हैं, और 2 लोग कंप्लीटली किसी इंडस्ट्री, इन दोनों इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करते, वो रैंडम इंडस्ट्री से होते हैं। वो कोई साइंस का स्टूडेंट भी हो सकता है, वो कुछ भी, कोई स्टूडेंट हो सकता है, कोई प्रोफेसर हो सकता है, कोई ओल्ड बंदा हो सकता है। सो वी मेक दीज 2, ये यूरोपियन टीम भी करती है ऐसे ही, और फिर पाकिस्तान में भी टीम करती है। सो वी मेक दैट वन। तो इसमें 2 से 3 हफ्ते लगते हैं, या 4 हफ्ते कभी का लग जाता है, ज्यादा पुश हो, क्योंकि बैकलॉग बहुत ज्यादा हुआ होता है। बट हम एक गाना सुनते हैं हर एक बंदे का, ये मैं आपको श्योरिटी या आर्टिस्ट को दूंगा। आर्टिस्ट को लगता है कि हम उनके ओवरलुक कर देते हैं म्यूजिक, और फिर हम जवाब भी देते हैं कि वेदर यू, बिकॉज हमारा ना, हम लोग वी आर वेरी पेक्यूलियर अबाउट सिलेक्शन इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ वर्क। बिकॉज मैं कहता हूँ कि मुझे कोई मसला नहीं, आई वुड लव टू हेल्प, बट आई थिंक हम लोग जब आगे से हम रिजेक्ट नहीं करते किसी को, हमने आज तक नहीं किया। वी जस्ट टेल देम कि मे बी यू नो, हम देखते हैं कि हमारा रोस्टर किस जॉनरा में फुल हुआ हुआ है, हमने टीयर्स बनाए होते हैं। अगर मेरे पास पॉप जॉनरा के इतने ज्यादा बेतहाशा आर्टिस्ट हैं, तो इफ ब्रिंगिंग अनदर वन देयर वुड जस्ट यू नो ऐड इन मोर ऑफ द सेम क्लटर हो जाएगा। हाँ, क्लटर हो जाएगा, और शायद मैं उस आर्टिस्ट को उतना लेवरेज ना दे सकूं जितना मैं दूसरे को दे रहा हूँ। अब हाँ, तो वो एक गलत चीज हो जाएगी ना, वो बैलेंस नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक तो हमारी टीम भी बहुत छोटी है, और शायद मैं उसको जस्टिफाई ना कर पाऊँ उस तरह से। तो हम कोशिश करते हैं कि जितना हमें डाइवर्स पूल ऑफ आर्टिस्ट मिल जाए ना, तो वो हमारे लिए बेहतर होता है। तो उस तरह से हम लोग कोशिश करते हैं एक्सपैंड करें उस एस्पेक्ट में, और ऑफ कोर्स वो चीज देखनी पड़ती है। बट अगेन हमारे पाकिस्तान में जॉनरास ही बेतहाशा है। मतलब हर किस्म का जॉनर है, और अब फिर हमारे लोकल जॉनर्स भी हैं, और फोक अलग है, फिर उसकी फ्यूजन अलग है, और फ्यूजन में भी डिफरेंट किस्म के, सूफी फ्यूजन फर्क है, फोक फ्यूजन फर्क है,
फिर लोकल लैंग्वेजेस में फर्क है, आप फिर जब बहुत कुछ स्टेप्स होता है। वो आप जाना शुरू हो जाएं तो वो बहुत डिटेल पे, तो फिर ये होता है कि वंस फिर हम इनवाइट करते हैं, वंस इफ समबडी इज सिलेक्टेड हम उसको बताते हैं कि वी वुड लाइक टू इनवाइट यू टू बी पार्ट ऑफ आवर रीआर्ट्स रोस्टर। तो हम एक मीटिंग सेट करते हैं उनके साथ, और उसमें हम बताते हैं कि व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड, हाउ डू वी साइन द कॉन्ट्रैक्ट, वी टेल देम द टर्म्स एंड कंडीशंस जो होती हैं आपकी स्टैंडर्ड रिकॉर्ड लेबल कंडीशंस जो होती हैं। एंड उसके बाद वंस द कॉन्ट्रैक्ट इज साइंड, we start first, we work on a plan, how we're going to project them, how we're going to work on the entire brand and all that, the identity and all that. और उसके बाद फिर हम रिलीजेस शुरू हो जाते हैं। फिर मैं तंग करता हूँ जब रिलीजेस नहीं आ रही होती तो मैं ब्रांड्स के पीछे पड़ जाता हूँ कि भाई खुदा के वास्ते कुछ निकाल लो। This is very good. पाकिस्तान में बहुत मसला है, रिलीजेस बहुत स्लो हो जाती है। नहीं, आपने एक साल में देखा होगा कि कश्मीर ने कितनी रिलीजेस निकाली, एक एल्बम निकाली, 2 सिंगल्स निकाले, क्वारंटीन सेशंस निकाले, कश्मीर की एक और एल्बम भी बन रही है ना, if I'm not wrong. They're working on an EP right now, extended play. तो काफी उसके ऊपर डेवलपमेंट होना शुरू हो गई है। ये बहुत जबरदस्त काम आप कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में म्यूजिक की निकलना स्लो हो जाता है, तो you need to keep them on their toes. वो यार यही वो लोग भी म्यूजिशियंस भी अक्सर हमें यही कहते हैं कि यार तुम सही काम करते हो, कि तुम हमें ना बार-बार रिमाइंडर्स देते हो कि ये काम भी करना है। क्योंकि ऑफ कोर्स यार देखें, हम लोग I don't mind the commercial aspect of the corporate side of music, सही, I don't mind that, but I just feel कि उसमें आर्टिस्ट की ओरिजिनलिटी ना कहीं लॉस हो जाती है, because it's very fixated, it's very corporate oriented, it's very it has a particular agenda. और ऑफ कोर्स आर्टिस्ट ने सर्वाइव करने कोई और एवेन्यूज भी नहीं है पाकिस्तान में, तो यही एवेन्यू बचता है ना पीछे। तो फिर मैं कहता हूँ कि जो आपका ओरिजिनल कंटेंट है ना उसको साथ साथ बनाते रहो। Exactly. उसकी वो होना बहुत जरूरी है साथ साथ। ठीक है, यू डू दिस कमर्शियल वेंचर्स वेल एंड गुड, बट डू दिस ऑन द साइड सो दैट आपकी रिप्यूट ओरिजिनलिटी वो बाहर निकले, जैसे दुनिया भर में निकलती है लोगों की। So what else rearts की capacity है to do you pay your artists or bands, or they or अच्छा you I think capacity है rearts की, you pay like a monthly income या क्या? So it's not a monthly income, it's quarterly. It's either it's basically हम prefer तो करते हैं कि fiscal year में, क्योंकि again then when it comes to monetization and revenue generation there are a lot of problems. There एक तो पाकिस्तान में PayPal नहीं है, नंबर 1, और नंबर 2 कोई भी चीज आप राउट करेंगे वो पाकिस्तान डायरेक्ट आ नहीं सकती, बैंक हमारे अलाउ नहीं करते। अगर आ जाते हैं तो फिर FBI वाले पीछे पड़ जाते हैं कि इतनी ज्यादा अमाउंट आई कहाँ से। तो अब ये मसलतन बातें भी हैं, तो हमने फिर इसका सोल्यूशन ये निकाला कि सिंस वी हैव कंपनी रजिस्टर्ड, रीआर्ट्स ही रजिस्टर्ड हुआ हुआ यूरोप में, एंड वी हैव एन बैंक अकाउंट, सो हम हर चीज वहां से राउट करते हैं। तो वो फिर क्योंकि इट कम्स अंडर द सेम लेबल कंपनी एज अ सब्सिडरी, मतलब कंपनी तो एक ही है, तो वो हमारा दूसरा ऑफिस है, वहां से वो ट्रांसफर हो जाती है अमाउंट, वो होती है, तो हम आर्टिस्ट को फिर वो देते हैं, मगर फिर इसमें टैक्सेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि राउट आपका एक जरा ऑल्टरनेटिव राउट है, तो वो उसमें होता है कि आपको डायरेक्ट नहीं है एग्जैक्टली, क्योंकि ऑफ कोर्स हमारे पाकिस्तान में लॉज नहीं है उस तरह से, वो आपको केटर नहीं करते। सो ऑफ कोर्स ये लीगल मसले हैं यहाँ के, क्योंकि एक तो जब इंडस्ट्री बन रही थी बैक इन द 2000s या कुछ बन होना ऐसे कहीं ना कहीं पाकिस्तान का म्यूजिक जा रहा था, तो जो हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं उन्होंने कभी इंडस्ट्री बनाई नहीं, कोशिश ही नहीं की कुछ इस्टेब्लिश कर लें, कोई लॉ ले आए या कोई जिससे कोई म्यूजिशियन का करियर या म्यूजिक इंडस्ट्री जो है वो स्टेबल हो जाए। हाँ, मैं कराकोरम से बात करते तो बिलावल भाई भी बोल रहे थे कि म्यूजिक की इंडस्ट्री में मसला ये है कि बिग आर्टिस्ट हैवंट गिवन बैक। हाँ, तो अब हो ये रहा है कि अब जो हम वही मैं कहता हूँ, when it comes to our younger generation, we're very like-minded, we want to collaborate and we want to sustain it ourselves. तो अब जब हम सस्टेन करते हैं ना, तो उसमें हम ये नहीं कर रहे होते कि यार वो फलाने ने ये गाना निकाला तो मैं भी निकालूंगा, कंपटीशन नहीं है कोई, कराकरम, कश्मीर, बयान, धूल, 21 फलाना, इन सब के दरमियान में डिफरेंसेस हैं वगैरह, बट आपस में सारे दोस्त हैं, एक तो बहुत अच्छी चीज है। वो लोगों तक ही लगता है कि वो कंपटीशन है, वो बिहाइंड द सीन हमें पता होता है हाउ एवरीवन इज कोलैबोरेटिंग, हाउ एवरीवन इज वर्किंग टुगेदर, हाउ एवरीवन इज कम्युनिकेटिंग एंड appreciating each other's work, and I think that is much required, because back in the early days it was so much competition that everyone started hating everyone.
वो लड़ाइयाँ, तो उस वजह से ना आपकी मोनोपोली, छोटी-छोटी मोनोपोलीज बनना शुरू हो गई, rather than a collective system. अब usually क्योंकि I've met record labels abroad as well, and I've met people from the music industry, different stakeholders. They compete together, but they also sit down together to create a law together, to work together for the benefit of each other. Because that's called healthy competition. So पाकिस्तान में बड़े मसले ये भी हैं कि आधे ज़्यादा हमारा म्यूजिक बिका हुआ है या आर्टिस्ट बेच देता है विदाउट नोइंग कि उसके लीगल राइट्स क्या हैं ओवर हिज कंटेंट. तो अब उनको पता नहीं होता, वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं कॉर्पोरेट के साथ, कॉर्पोरेट वो गाना ओन कर लेता है. तो आप कल को खुद भी रिलीज कर रहे होंगे तो आप रिलीज नहीं कर, अपना गाना ही जो आपने खुद बनाया है वो आप रिलीज नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज यू साइंड अ पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट विद अ पर्टिकुलर XYZ कॉर्पोरेट या XYZ पर्सन. तो उसने आपको उस चीज के, उस मोमेंट के, एक परफॉर्मेंस के पैसे तो दे दिए, बट उसने उसके क्या किया कि आपकी लाइफ टाइम की वो चीज जो है ना अपने पास रख ली. अब वो जितना मर्जी उसको डिस्ट्रीब्यूट करे, जितना मर्जी उसके ऊपर पैसा बनाए, वो कॉर्पोरेट है उसकी, इट हैज द पावर टू मैक्सिमाइज मनी ओवर इट. तो वो करते हैं और ये होता है. तो जैसे हमें ये भी आइडिया नहीं है कि सिंक लाइसेंस क्या होता है. अब जैसे इन जब ऐसी कोई चीज होती है तो आप कॉर्पोरेट्स को एक सिंक लाइसेंस देते हो. उसमें होता है कि आप एक वक्फा बताते हो कि 1 साल के लिए मैं आपको एक चीज दे रहा हूँ, एक गाना लीज पे दे रहा हूँ, मैं लाइसेंस कर रहा हूँ आपको, मैं 1000 बार उसे अपलोड करूँ, आप उसकी रॉयल्टी मुझे साल बार साल पे करेंगे जब भी आप उसको एडवर्टाइज करेंगे या आप कहीं भी यूज करते हैं. तो वो रॉयल्टी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ क्योंकि इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ कभी, तो अब हमारे आर्टिस्ट आर वेरी अनअवेयर. So that's another point where we come in, where we literally help artists understand their rights. कि भाई आपने, हम कंसल्टेशन करते हैं, हमारी पूरी लीगल कंसल्टेशन होती है, इसमें हम उनको पूरा बताते हैं कि आपकी ओनरशिप किधर किधर है. तो अक्सर आर्टिस्ट मुझे इन चीज़ों पे भी फ़ोन कर रहे होते हैं कि अच्छा प्लीज़ हमारा कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ लो, हमारी चीज़ें देख लो, कहीं मसला तो नहीं है, बिकॉज दीज कॉर्पोरेट्स के साथ हम एंगेज हो रहे हैं XYZ प्लेटफॉर्म पे. तो आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक ये भी चीज़ होना शुरू होगी कि पीपल आर गेटिंग मच मोर अवेयर ऑफ देयर वर्क एज वेल. बट अगेन अच्छी बात है. बहुत कॉपीराइट वाला सीन हुआ था, वो लास्ट सिगरेट जो चैनल था, व्हाट वाज इट ओके टू टॉक अबाउट, वो क्या हुआ था उसमें? वेल पहले तो मैं पब्लिसाइज भी हुआ था वो. हाँ, वो एक तो मेरे ख्याल से पब्लिसाइज बड़ा गलत हो गया था, बिकॉज वी नेवर वांटेड टू मेक इट अ इंडिया पाकिस्तान थिंग. वो तो जितने भी न्यूज़ एजेंसी थे, दे मेड इट अ वेरी इंडियन यूट्यूब चैनल, पाकिस्तानी रिकॉर्ड लेबल, मतलब वो ना बड़ा ड्रामेटिक सा उन्होंने कर दिया था. सो हमारी तो बिल्कुल भी वो इंटेंशन नहीं थी, बट इट वाज अ यूट्यूब, इट वाज अ वेरी ग्रेट an amazing YouTube channel which was there, which was promoting music, and we were all supportive of the idea that this guy is uploading Pakistani music and as well as Indian music, and curating वो curated playlist बनाता था lyrical content के साथ, which is completely fine, understandable, लोग करते हैं, समझ भी आता है. अब हम लोग एक एल्गोरिथमिक रन करते हैं YouTube के ऊपर, जिसमें हमें पता चल जाता है कि यार XYZ बंदा मोनेटाइज तो नहीं कर रहा किसी का म्यूजिक. अब वो उधर से हमें ये पता चला कि ये तो एटलीस्ट हमारे 7 आर्टिस्ट का जो गाने ये तो मोनेटाइज कर रहा है. मैंने देखा कि तो इस बंदे ने इतने पैसे बना लिए में एक गाने के ऊपर, उतने तो मेरे बेचारे आर्टिस्ट ने कभी जिंदगी में नहीं बनाए जब से उसने गाना रिलीज किए. तो यू आर गेटिंग माय पॉइंट. तो फिर उस पॉइंट पे आई रोट हिम एन ईमेल. पहले तो हमने ईमेल लिखी उसको ऑफिशियल एज अ रिकॉर्ड लेबल के, देखें आपने हमारे XYZ आर्टिस्ट का काम लिया है, हम आपसे बड़ा. उसमें बयान भी थे, कश्मीर था, 21, there was नसीर अफरीदी, महदी मालू, हमाज, and so on and so forth. There were a lot of artists, but 7-8 आर्टिस्ट थे जो रियार्ट्स के पैनल के ऊपर थे. तो हमने लिखा, देखें यार हमें पता है कि आप मोनेटाइज कर रहे हैं, एंड लेट्स कम, वी अंडरस्टैंड. पहले तो हम आपसे ये बात करना था कि आप मोनेटाइज करना खत्म करते हैं, बिकॉज हमें भी पता है कि भाई पाकिस्तान इंडिया में कोई चीज़ हो नहीं रही, exchange नहीं हो रहा, borders are locked after the Pulwama event that happened a year earlier, so we knew everything. So हमने बड़ा politely I messaged and said कि अच्छा पहले तो कोई response नहीं आया, हमने wait किया, I waited for a month कि अच्छा अब करेगा. मैंने कहा यार ठीक है. अब मुझे एक आर्टिस्ट ने कहा, I won't name the artist, but one of the artists said कि यार I really want my content to be off because I want traffic on my channel.
मेरे चैनल पे इतने व्यूज नहीं जितने इसके ऊपर है, मतलब मुझे समझ नहीं आता, ये गलत बात है ना. somebody is monetizing my music and then on top, not even giving me the royalty, the leverage of my work and creating credit over it, even making money over it. तो मैंने उस आर्टिस्ट के कहने पे कॉपीराइट स्ट्राइक कर दिया. पहली कॉपीराइट स्ट्राइक की तो उसने मुझे ईमेल किया, हाँ भाई कौन हो, मतलब ऐसा एक बड़ा रूड सा रिस्पॉन्स है. आई डोंट क्वाइट रिमेम्बर बट इट वाज अ रियली रूड रिस्पॉन्स सेइंग के I am this and I have XYZ number of subscribers and I am this and that, and if you had any arrogance. problem, so there was a lot of arrogance, and if you have any problem you could have directly messaged me or emailed me. And I was like, dude, hello, we did email you, you completely ignored it, like come on. And that's when the thing triggered actually. So we told him again that okay, there are some artists music that is on your channel and we are well aware of the fact that you are monetizing it. Please refrain from monetizing it or else we will send a copyright strike, because that is this particular second time you said that. This is the second time I'm saying that. And we said कि देखें, we can come to a resolution, we can reach a consensus, we can even collaborate. Maybe we send you the music officially through an official document and हमें पता हो, और we can reach a collaboration where you can represent the artist officially on an official forum. But he was reluctant. He was like, ऐसे तो नहीं होता. And he's like कि हाँ. फिर then हमने फिर second copyright strike किया. Of course there's a law in YouTube कि after like 3 or 4 copyright strikes your channel gets down. So just as a warning we sent another copyright strike. He kept on saying कि आप अपनी पुरानी copyright strikes हटाएं, फिर मैं बात करूंगा. हमने कहा हम हटाएंगे नहीं, because of course you're the one who's wrong in so many ways. आप आगे से मतलब उल्टा लगे हुए हो कि हटाओ, मतलब bro easy हो जाओ, मतलब थोड़ा समझो. So I was like, मैंने कहा देखें, there are two routes to this. Either we do it in a civilized manner, in a politeful manner, where we come to collaboration, we understand each other's point of view. I would love your community to thrive there. I don't want your channel to go away. I feel for it, because even I used to sometimes go there and listen to music. It was a very nice playlist and all that. But I was like, look, there are ways of doing this. You could have shared the artist's music from their official profile onto yours, because there's an option, rather than downloading their music and uploading it again. You could have done that, but you chose not to do so. The second thing I said that then and on top we know that you monetize and you're not being honest about it, and you kept on saying कि मैं तो promote करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, और आप अपना जो है जो channel है वो इस पर्पस से मैंने तो मोनेटाइज नहीं किया. फिर बाद में आफ्टर द सेकंड स्ट्राइक ही एडमिटेड हिमसेल्फ दैट ही मोनेटाइज एवरीथिंग. और फिर हमने कहा कि मोनेटाइजेशन रिपोर्ट शेयर करो हमसे सारी. अब वो सारी शेयर ना करे, ये भी एक मतलब. अब हमारे पास एविडेंस है. फिर उसने इवेंचुअली वो भी सारी शेयर कर दी एक सर्टेन पॉइंट पे आके. but then फिर मैंने कहा कि let's go through either, there are two ways, either we can collaborate or we can go through a legal channel. They are the only two ways. तो आप मुझे बता दें कि what suits you. तो मैंने कहा उसके लिए एक लीगल चैनल, एंड ऑफ कोर्स जो भी चीज़ हम कोलैबोरेशन में करेंगे हम बड़े ऑफिशियल तरीके से करेंगे. इट कैन नॉट बी डन anonymously, because Last Secret is a very anonymous community. तो मैंने कहा but of course we'll keep your identity in confidence. We won't attack you in a particular way or not publicize your name anywhere, your real name. So what we want is like आपका, of course I made him sign an MOU and I wanted his like memorandum of understanding होती है ना आपकी. तो हमने कहा हम आपको भेज देते हैं, आपको pointers लगा देते हैं कि आप जब भी कोई content करेंगे आप request लेंगे, उसकी पूछेंगे लेबल से या आर्टिस्ट से कंसेंट लेंगे, परमिशन के बगैर आप नहीं करेंगे, और आप अगर मोनेटाइज भी करें तो आप उसमें से रॉयल्टीज देंगे. हम प्रेफर करेंगे आप ना करें मोनेटाइज, बट क्योंकि अब इंडिया पाकिस्तान में कुछ है नहीं ट्रेड, तो वो इंडिया से कोई भी मोनेटाइज कर सकता है पाकिस्तानी म्यूजिक, और पाकिस्तान से कोई भी मोनेटाइज कर सकता है इंडियन म्यूजिक. तो ये भी चीज़ है एक. तो हमने तो बड़ा क्लियर कट कह दिया उनको कि अब जैसे एक तो यूं बात की तो ही डिड नॉट एग्री. तो हमने कहा फिर ठीक है, देन देयर इज अ लीगल वे टू इट. ठीक है, द लीगल वे इज दैट वी डू, बिकॉज आवर आर्टिस्ट पर्सनली डोंट वांट देयर कंटेंट टू बी देयर. They're not happy with the fact that you cheated, you illegally used their music, you on top monetized over it, made money over it.
and exploited their content, their creative creation, without giving any due credit to them, except for the fact that they were uploaded on your page and you said कि हाँ मैंने उनको promote किया because your page was popular with 500k subscribers, something like that. So उसके बाद वो strikes हो गई, तो वो एक पूरा emotional drawback था. And of fans, of course I understand where the fans are, when एक community का हिस्सा होते तो you know you have this belonging to the community. But then I would also like to tell you about this one community which is in Islam, which is based in Islamabad, called Aesthetics Urdu. ठीक है, अब वो भी एक कम्युनिटी है जिसमें भी वो उसी तरह से लास्ट सिगरेट की तरह काम करते हैं, बट वो एक बंदे का कंसेंट लेते हैं. वो रीच आउट करते हैं आर्टिस्ट को. उनकी भी सब्सक्राइबर बेस बहुत स्ट्रांग है. ठीक है, दैट्स अ पाकिस्तानी यूट्यूब वर्जन ऑफ लास्ट सिगरेट, बट वो एक ऑथेंटिक वे से चलता है. ठीक है, सो एंड दे रिस्पॉन्ड एज वेल. सो वही बात है कि इट्स हाउ यू अप्रोच थिंग्स. And then showing arrogance, and then of course जब हमने press release अपनी release की about this agenda, because there was a lot of hate speech coming from across the border regarding this from the cigarette fans. तो उसके हमारे artist के ऊपर आई थी, तो हमने artist को के behalf पे हमने अपनी statement release की कि हाँ कि this is the reason, and फिर हम that was supported, and then of course the media picked it from there, and the following day once the media picked it up, because हमारा official partner है Mashable Pakistan, तो हम Mashable के साथ काम करते हैं. तो Mashable में release की हमने statement, तो वहाँ से the story got picked up, and then it went across border as well, and it featured in the first post and other local music scene जो उनके वो हैं magazines और print media है. तो जब आया तो उन्होंने वहाँ हमारी 2-3 लोगों से बात हुई जिन्होंने उस community के लोगों से बात की. तो उसमें उसने कहा, उसने admit किया कि he was guilty and what he did was wrong. He admitted that. And he said कि discussions चल रही हैं collaboration की, but मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊंगा because I have a certain way of thinking. तो उसमें तो मैं तो नहीं कुछ कर सकता ना. That's his. We tried our level best कि कोई effect ना हो इससे, खास तौर पे जो community थी वो effect ना हो, उसका channel भी effect ना हो. But अगर एक बंदा arrogant you went down that route. Yeah, we यार of course. देखो यार, मुझे पता है कि मेरे आर्टिस्ट का फायदा हो रहा है उस चैनल से, क्योंकि उसका गाना प्रमोट हो रहा है, डेफिनेटली हो रहा है. बट एक तरीके से होना चाहिए. मगर एक होता है सिविल, एक तरीका होता है, एक बाय लॉ एक तरीका है. एक हमने एज ह्यूमन बीइंग्स लगाया कि वी नीड टू गिव द ड्यू क्रेडिट टू हु इट बिलोंग्स. या वो तो बात होगी ना, आप किसी का हक मार रहे हैं, तो वो चीज देन दैट्स लाइक wrong of anyone who goes that way. So yeah, so that was the entire episode of kind of like a halfway. मैंने आपको जरा short form बता दिया. मैं एक wrap up करने से पहले 2 सवाल और हैं, then you have to go. Spotify और Apple Music ये कब launch होंगे पाकिस्तान में? Apple तो नहीं पाकिस्तान में आ सकता, क्योंकि Apple तो officially exist नहीं करता पाकिस्तान में. पहली बात है. हाँ, MacBooks और iPhone वगैरह तो कोई आउटलेट नहीं है ना. Exactly. तो जब Apple आएगा तो Apple as a whole ही आता है, वो पूरा इकोसिस्टम इकट्ठे लेकर आता है. म्यूजिक सिर्फ नहीं आएगा, Apple as a whole आएगा. हाँ, because Apple is like a whole. It's not a separate thing, because Apple is an entire ecosystem ना. वो एक पूरा एक ecosystem है उनका. Apple Music, iTunes, iPods, this and that, iWatch. So like an entire integrated system. So वो जब वो आएंगे तो they'll come in one go and they'll take over whatever they want to do. When I cannot cannot really disclose when Spotify is coming, but it's coming very soon. It's officially coming. I heard January. I cannot really. A little birdie told me it was in January. Maybe yeah, like you're close by. Maybe it's coming very soon. Very soon. That's something I can tell you. Very cool. Is this a confirmed thing? Yeah, in the works. Yeah, शायद now. No. It's confirmed. It's confirmed. We are in talks with Spotify right now. Spotify Pakistan. The persons involved bringing to Spotify from the Spotify's office. Actually, we are actually talking to them and we are talking in terms of label partnership. उनका जो segment है उसमें they have already contacted us. We have already contacted them. We have exchanged our catalogs with them already. It's all done.
So the thing is that of course वो सब कुछ हुआ हुआ है, तो they are of course showing concern, and but it's gonna launch not only in Pakistan, it's gonna launch in Bangladesh, Sri Lanka at the same time as well. So it's like a launch. इंडिया में लॉन्च हुआ है? ऑलरेडी हुआ हुआ इंडिया में, पिछले साल हुआ था, पिछले या 1.5 साल पहले हुआ था. तो पाकिस्तान में, श्रीलंका में और बांग्लादेश में इकट्ठे हो रहा है. That's very good news. Final question ये है कि what is rearts doing to promote live music in Pakistan? Well, we this year we पहले तो पिछले साल तो हमने काफी ज्यादा gigs भी करवाई. We at our own office and other places that we were collaborating and working with, but because we are not artist management as such, so हम लोग या artist management की तरफ अभी तक उस तरह से गए नहीं. Although this year unfortunately we were about to launch our first music festival called Remix, but due to COVID, March में होना था, everything was ready, but COVID came in and everything was like put on hold. So, but we did collaborate with 2 of the biggest music festivals in Pakistan this year, where we created our own stage called the Reart stage. एक Lahore Music Meet, and the other one was Lahoti Melo. So we collaborated with both the festivals. I think they're the biggest music festivals in Pakistan. Lahore Music Meet being a bigger one in Punjab, and Lahoti Melo being the biggest in Sindh. So and they come at par with each other. So I would both rank them both at the same level, because they're like both very top quality festivals. Like hats, or like huge credit to Natasha Nurani and her team, and for Lahore Music Meet, and Saif Samejo and his team for Lahoti Melo. तो उसमें हमने उनको कोलैबोरेट किया था दोनों के साथ, दोनों फेस्टिवल्स का बैक टू बैक फेस्टिवल से. तो उसमें हमने क्या किया कि हमने अपना एक stage banaya called the Reart stage, and that was an open stage for upcoming musicians, which are never seen on camera, or so it was a mix of upcoming and newcomers. तो उसी वक्त हमने Lahore Music Meet में बयान किया, launch भी किया था एल्बम का, physical album. Karakoram played there as well, I think. नहीं, Karakoram did. Karakoram played at Lahore Music Meet. Lahore Music Meet के अंदर multiple stages होते हैं. They played there are multiple stages. So they were at the other stage. There was another one. We had like, of course, because Lahore Music Meet का अपना भी main stage होता है. So they were at the main stage. Then there's a Reart stage, which was on the side for indie musicians, upcoming musicians, and all that, because we were supporting that idea. So ये इस तरह से हमने किया था इस साल, and we do plan to do continuously doing that. इसी वजह से like we're launching our own digital arts festival now, Lahore Digital Arts, जिसमें we will be incorporating a lot of music people, like people from the music industry, and might do some pre-recorded live performances online, because I think जब वो क्योंकि Zoom की वजह से, bandwidth की वजह से कभी live उस तरह से जाती नहीं, तो we might do a pre-recorded live thing and launch it during the festival once it goes live. Yeah. Yes. Okay, then we're already working on it. Yeah. Thank you for your time, Azeem bhai. I really enjoyed the talk. Music administration side में, especially पाकिस्तान में बहुत बात नहीं होती, तो ये बहुत definitely एक topic है जो explore होना चाहिए. People need to understand कि behind the scenes क्या होता है, तो I think that's important. Exactly. और इसमें एक सबसे बड़ी चीज ये है कि काफी मसले हैं जो कि लोगों को, क्योंकि of course they see musicians right there with their music, they don't know कि the hurdles that the administration side has to go through to make sure the listener gets that experience. Exactly. So it's a whole journey. It's a roller coaster journey actually. I'm just happy there's a record label in Pakistan. मैंने पाकिस्तान म्यूजिक properly सुना शुरू किया 2010-11 में. I don't think उसको कोई proper label या proper कोई system था. तो I see improvements now. तो मैं इस बात को खुश हूँ कि अब आगे म्यूजिक आएगा. तो thank you for your time, Azeem bhai. Thank you so much for hosting me. It was lovely talking to you as well. Thank you. Black Hour, औज, कराकरम, धूल, ये तो 4. अली नूर की भी एल्बम जो पागल है, उसकी 4 ट्रैक्स रिलीज हो चुके हैं, 4 रहते हैं अभी, तो 4 वो भी आने हैं अभी. अली हमजा इज आल्सो रिलीजिंग हिज म्यूजिक. अली हमजा जो है, जो अली नूर का भाई है, जो नूरी Yes, I know Noori.
वो बताया था मुगले फंक का EP आ रही है, सेकंड EP आ रही है. Zoha Zubairi, she's releasing her entire album. Natasha Humera Ijaz is working on her first album as well, and she's also working on an electronic set. कश्मीर की भी एल्बम बन रही है Kashmir ना. is working as well.